Good afternoon, everyone. So in this class, we are going to cover the Introductory Development Economics for your semester 5. Through this class, I would like to tell you that after covering all these classes, you would be in a position to understand development economics. Obviously, that is why you are in this class. Apart from that, we will try to cover all those facts or parts of the things that are there in your UGCNET syllabus. Apart from that are there in your CUETPG classes, or that are relevant for your future, or if you want to do the economic research in this field, or any related field that you want to work in, you would be very comfortable in that. Okay. So now if I tell you what is development, so basically if we say development, right? So since we start studying about the Indian economy or the economy in general, what we study is that growth and development are two different things, right? So if I ask you, what is growth, what is development? So the first question that start in development economics is regarding growth and development. So how we understand this? You need to first think it as if development is a canvas, the growth is only a picture of it. Why I'm saying this? Because what is development? If you ask different economists, they would provide you different definitions. In your chapter as well, if you look at the Arthur Lewis, they define development differently. If you look at Amartya Sen, they define it differently. If you look at Shear and others that are mentioned in your reading, they define the development differently. So if I ask you what is development, so you can say that, okay, sir, if the income of the people is growing, it is development, right? If they are having more or better standard of living, they are developed. So if we take definitions that are generally given, like growth, which is increase in per capita income, or income is increasing, or wealth is increasing. But if you look at development, it is not just the increase in income. Apart from that, it is also what? Increase in happiness, increase in well-being, increase in freedom. Sorry? Okay. So all these things are there in economic development, and that is why when we say development is a canvas and growth is just a picture in this, right? Now if we say that per capita income, and let's start with your formal reading that start with many questions that are there, like how can we define growth? So in your reading they start with the questions that like how we can define it, or some of the questions that they ask. What are these questions? These questions are related to like the living standard part. So if we talk about living standard, why it is different in different countries. Now you may see like when we start studying about the Indian economy, or when we start studying the development in general, what we have, please be seated fast. So you guys are in this class only, right? So yeah. So now, since the start of development study, what we say, like, so when we talk about development, then we say that, okay, income is growing, it is development. If your wealth is increasing, it is development. But you tell me one thing. Suppose you are from a wealthy family, your parents are taking all the decisions for you. You don't have freedom, even at the age of 18, to go out at around 7 p.m. at night. Is that a development for you? No. Because development also comes with capability, freedom, choices that you make. And that is why Arthur Lewis say that with development, it is the choices or the various choices that you have. It is development. Amartya Sen define it as the capability approach. Increase in your capabilities. Like, since you are coming in the rainy days, you can see that because of the rain,
and because of the lack of development in the roadside, you may found waterlogging here and there, and that is why you don't have the capability to come to the class because of the waterlogging, which is inefficiency from someone else's part, right? So development is all these holistic things, and that is why we are defining development as a canvas in which growth is only a picture, or growth is only a fraction of it, right? Now, if we take different economy or the world together, what we find that in some country there are standard of living are very high, right? Like if you go to America, if you go to Norway, if you go to some other country, you would find that the standard of living are different, right? But if you go to some South Asian countries like Bangladesh, India, China, you may find different things. Apart from that, if you look at the productivity part, so in some part of the world, productivity is different, and some it is different. In productivity, if you look at the production function, so if you may find that capital output ratio. What is capital output ratio? So this is your capital output ratio. So in some country, in putting some amount of capital, how much output you are getting? In some country it is high, and in some country it is low. Low means with the same amount of capital you are getting higher output, right? So it is low means you are somewhere in, let's say, China, where productivity is very high. It is high in some country like India, where most of the capital are going into the production of output, so efficiency is lagging. Like I was reading an article yesterday, so I found that in Afghanistan, some of the production of pulses are as high as 3 or 4 times higher than that it is in India, right? So productivity difference is there. So these are some of the questions that we look at in terms of development when we look at these things. So you can, in the later part, you would find that your chapter talks about some stylized facts. What is stylized fact? It is basically when you say something which is universally true or generally applicable in the normal time. Like in rainy season, you could find waterlogging in developing countries. It is general fact that you would find. So in development economics, some stylized fact is given. Like on those facts, you could define development, or on those facts, you could say that, okay, if these things are there, then it means there are development or not. There are something that would be present in some developing country or in some developed country. So these facts would be there. Like, for example, this is a fact that everyone will die. Right? This is a fact. So similarly, you have some stylized fact, which was earlier given by Calder, and as economy grew, we would find that for new development economics, we have different stylized facts. Okay, so if you look at your reading, there are something, I'm talking about the stylized fact of Calder, which is not there in your syllabus or not in your reading, but you must know these things. So you can write, you should write this thing, write down, note it down. So we have stylized fact of economic development. So you write, first, these were given by Calder. So you can write, it was given by Calder. First one is, your capital output ratio is constant. Capital output ratio is constant. Then you have per capita output also constant.
per capita output also constant. So capital output ratio is constant. This is first. Second, per capita output is also constant. That is, Y by L is also constant. Third, the level of capital, it also remains constant. Fourth, you write, so in any economy, if you see, if this is wage share, and then that something that is going to the profit earner or capitalist, that is your profit share. That would form your total output. Since your total output is constant, these are also constant in Calder's model, and it is also a fact. So this is the fourth thing that you would find. So that is, your wage share and your profit share is also constant. Right? Total output would be divided in wage share and profit share, that would remain constant. Now, rate of investment is also constant. Rate of investment is also constant. And the last one is, last one is, each economy, whether it is developing or developed, will have different growth rate. This G would vary among nations. This should vary. Delta K by K, delta Y by Y is this G. This growth rate would vary among nations. Okay? चलो इसके साथ देखो, अगर मैं तुम्हें समझाऊं कि मैं एक्चुअली, अगर तुम्हें फर्स्ट पूरी ही यूनिट का मैं तुम्हें ओवरव्यू दूं, तो तुम्हारा जो पहला यूनिट है, जो तुम्हारा फर्स्ट यूनिट है, अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट, उसको तुम ऐसे समझ सकते हो. पहले जो हमने बात करी कि डेवलपमेंट होता क्या है, ठीक है, अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने अलग अलग डेफिनेशन दिया है, वो हम आगे देखेंगे कि क्या दिया है. उसके बाद कि क्या फैक्ट्स हैं जो किसी इकोनॉमी में प्रेजेंट होंगे ही होंगे अगर हमें डेवलपमेंट देखना है. तो अब ये स्टाइलाइज्ड फैक्ट जो हमने बात करी, ये कुछ फैक्ट्स हैं जो होंगे किसी भी इकोनॉमी में. अब इसमें जब चेंज होगा तो हम कहेंगे कि उसमें ग्रोथ हो रहा है. और जब ग्रोथ को कुछ देखो, जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, कोई भी इकोनॉमिक्स के फील्ड में तुम कोई भी चीज़ देखोगे, जैसे कि हम कहते हैं लोगों की इनकम बढ़ रही है, एम्प्लॉयमेंट कम है, इनइक्वालिटी ज़्यादा है, ये सारी चीज़ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का पार्ट है. ठीक है, तो जब हम बात करेंगे इन सारे फैक्ट्स के बारे में, चाहे हम पब्लिक इकोनॉमी की बात कर लें कि हमारा इन्वायरमेंट, या फिर हम इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की बात कर लें, रिसोर्स माइनिंग की बात कर लें, कुछ भी बात करेंगे तो डेवलपमेंट की हम बात करेंगे, क्योंकि इन्वायरमेंट में कहीं कुछ हो रहा है, उसका इम्पैक्ट तुम पे भी आ रहा है बिकॉज ऑफ द डिक्लाइन इन दिस what we can say, like the environmental degradation or more the crop burning, you would find the pollution in Delhi. ठीक है, सारी चीजें तुम्हें इम्पैक्ट कर रही, तो तुम्हारे डेवलपमेंट इम्पैक्ट हो रहा है उससे, बिकॉज तुम्हारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उससे डिग्रेड हो रही है. तो जब भी हम बात करते हैं डेवलपमेंट की, तो हम सारे फैक्ट्स को लेके चलते हैं. तो जो भी चेंजेस इस फैक्ट में होंगे वो तुम्हें बताएगा, जो हमारे स्टाइलाइज्ड फैक्ट थे वो तुम्हें बताएगा कि ग्रोथ हो रहा है या क्या हो रहा है. ठीक, तो ये यूनिट यहां से स्टार्ट होता है. देन दे टॉक अबाउट डिफरेंट मेजर्स ऑफ डेवलपमेंट, डिफरेंट मेजर्स. ये हो गया, ये फर्स्ट यूनिट में इतना ही है, और इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस.
ठीक, इसी के जब तुम सेकेंड चैप्टर में आओगे तो सेकेंड चैप्टर में क्या करते हैं कि डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए अलग अलग जो हमने मेजर्स ले रखे हैं उसकी ये बात करेगा। और जो थर्ड तुम्हारा चैप्टर है वो जो है तुम्हें कुछ टेक्निकल डिटेल्स देंगे, ठीक है। लाइक कि हम जब डेवलपमेंट की मेजर की बात करते हैं तो हमने बोला कि चलो इकोनॉमी ग्रो कर रहा है तो जीडीपी पर कैपिटा अगर ग्रो कर रहा है तो एक वो फैक्टर हो गया, बट इसके साथ अगर हमें HDI भी पता हो, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो हम वो पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हमने बोला कि इनइक्वालिटी एक अलग चीज़ है, बिकॉज देखो इनइक्वालिटी क्या है, अगर उसको हम जनरली भाषा में बोलें तो क्या होता है, इनइक्वालिटी इज समथिंग लाइक व्हेन यू आर कंपेयरिंग टू पर्सन्स, वन इज अंबानी, वन इज अडानी, both are rich but both have income differences, so both they can be unequal as well. So on a given parameter, if they have different capabilities, if they have different resources, they are unequal. When it becomes troublesome for an economy, it becomes troublesome when larger portion of the population are having the deprivation compared to a smaller section having all the privileges, then it becomes a difficulties. So इसी चीज को कैटर करने के लिए, टू कैटर ऑल दीज थिंग्स, वी केम अप विथ इनइक्वालिटी एडजस्टेड HDI, राइट। देन वी हैव समथिंग कॉल्ड ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट. Then you might have heard about the multi-dimensional poverty index. And when I talk about the multi-dimensional poverty index, I would talk about all the indicators that are there, because all these technical terms and all the components of multi-dimensional poverty index is very important in terms of if you're going for UGC or your CUETPG classes, or if you're going for master's entrance. They ask the questions based on what is the percentage share or what is the weightage of it. So all these that become important. And even in some interviews, like they ask you like how UN has defined different countries. What is low income country, middle income country, what is upper middle income country, how you define all these things. So all these are there. And again, you might have seen that we have HDI. This HDI gives you some indicator which is based on from 0 to 1. Now, based on this indicator, how would you categorize how the countries are being defined, right? So when things come up like that, you should have the knowledge, and all these things are covered in second chapter and your third chapter. Okay, in the first chapter, you have some basic definitions, you have some basic conceptual clarities that you need to have, and then the things that like different economic concepts, different theories that are being given. Okay, so this is how we are going to cover the entire unit for you. And if we take 2-hour classes, then in 3 classes, you will have all these things covered. Okay, so next you define what is development as defined in your textbook, right? Development. You're right. The process of improving the quality of all human life, and capabilities by raising people's level of living, by raising standard of living, self-esteem and freedom. I gave you example for freedom, like whether you can access some resources or not, that is your freedom. Like if you are in a college, if you are deprived from accessing library or certain part of the books from your library, you are deprived from those privileges, and hence your environment is not that developed, right? So in a good institution, you would find that you can access any resources that are there. Like if you go to DU, you would find you can access all the books that are there, whether you are from that stream or not.
You are from economics, you can go and access the book from the science background or commerce background or arts background or any other things, right? So that is called development. And as we move, you would find that the capability approach that is given by Sen, they talk about this in much detail, okay? Next, now comes when we talk about the standard of living part. So you see, now if we talk about different strata, so we can make this like, so as in we study in the game theory, have you studied game theory part? So now you have like, so poor, rich, access, and not access, right? Even if they are rich by income, but they don't have access to a resource, are they developed? No, right? But if you are poor, but you have the access, so you are developed. So development could be defined in that way also. Like, they gave you example of a bicycle. So a bicycle, if a poor has a bicycle, it's good that they have the accessibility, they have the thing. But if the poor is unable or disabled to ride a bike, will they be able to enjoy it? No. So in the later part of this chapter, they talk about functioning. That is by Sen, right? So based on that, whether you are poor in terms of income, but if you have the access to resources, you are developed. But if you don't have the access, then you are certainly not developed. And if you are rich, you have access, then it is fine. But even with rich, if you don't have the access, then you are not developed per se. So that is one thing that you need to cover. Then next thing you write, people can be classified in different strata based on access to resources. Now let's say again, first, second, third, and fourth. So access to resources. So basic access to resources, if we talk about, let's say, cooking fuel. If someone is cooking by means of coal, so there would be a huge amount of smoke, which can lead to different hazardous diseases. So if as basic as cooking coal, then something is using coal. Someone is using coal. Someone is using kerosene. Someone is using piped natural gas, PNG. And some has electric heater. So as basic as cooking, like medium of cooking coal, can define what is the standard of living people can have, right? So someone having a coal can be classified as lower income group. Having kerosene is less like hazardous, but kerosene has its own disadvantages because kerosene also produces smoke. Kerosene can have different hazardous situations like explosion and all. Someone is using LNG or PNG and having electricity. So those having an electric heater or electric one, they can afford higher machineries. So they have in the higher strata or the fourth strata. And someone using as basic as coal, facing the different hazardous diseases, are in the first strata or the extremely poor, right? Second thing that you can think of,
education, basic standard. And based on all these things, like when you go on thinking that, okay, why these things are there, because these are all the basic things. Like in what we are seeing, that now in order to improve the standard of living of people, government is having the Ujjwala Yojana, the piped natural gas to all, or the cylinder facility to all the households, right? So that is something you at least keep them in the third strata, or in the high, like lower higher group, or the upper middle group, right? This is lower middle group, this is upper middle group, right? So government is trying to put you here, right? So in terms of education, if we say, if someone is not able to get education till the primary level because of n number of factors, they are in this category. But if someone can go till primary, but primary is fine here, but upper primary or secondary level, some can afford, some cannot, then they are in the second group. Third, what if you can also think of this, like primary would be there, secondary would be there, but in terms of tertiary, someone drops here. Because now in tertiary education means the college education. You would if you look at the gross enrollment rate, you would find that primary and secondary level, it is more than 75%. But when it comes to the tertiary level or college level education, you would find that it is much lesser than 48%. Why it is so? Because at this level, when you enter the college, many of the students drop out because of they want to support their family, especially women, especially girls, because they want to support the family in terms of caregiving work, in terms of household chores. So because of that, they drop out. So they are from the upper middle group. But only some part of the family, or some having the upper or the upper mid, developed one, or the upper groups, they can only have, or the fourth strata population can afford to have higher education. So if you are getting the privilege to get the higher education, it's because you are in this strata based on all these things, right? So this is as basic as education, and that is why you would find that now government promotes you to go for higher education, more and more higher education. If you talk about 15 years earlier, when the gross enrollment in secondary education was as low as 60%, government started with programs like providing cycles, providing dresses, providing free meals. And because of these efforts, the gross enrollment has crossed 78% now. Okay, so that is because these are the basic things, because basic ability, basic capability development approach that the government is following, right? Next thing that you can think of, anything that you want to add? As basic as water, right? So in terms of water, what we can see, those who don't have clean drinking water or sanitation, right? They have to fetch water from far behind. They would be here in the first strata, right? Think of like older societies. पुराने जमाने की बात से सोचो, जिसमें या पुरानी मूवीज याद करो जिसमें people used to carry a lot of water in their head. ठीक है, 50-100 मीटर दूर या 1 किलोमीटर दूर से पानी लेके आते थे. ठीक है, because they can't afford to have a tap water connection, right? तो अपर लोअर इनकम ग्रुप में ऐसे ही लोग होंगे. ठीक है, जो लोअर मिडिल ग्रुप है उसमें क्या होगा? उसमें क्या होगा कि यू हैव लाइक अ प्लेस वेयर यू द वाटर कम्स यूजुअली, बट यू हैव टू मेक अ क्यू. लाइक तुम देखोगे अभी भी इन दिल्ली, इन द एरिया लाइक दिल्ली, इन द सिलमपुर एरिया, व्हेन देयर इज वाटर शॉर्टेज, व्हाट हैपेंस इज टैंकर्स आते हैं. ठीक है, फिर वहां से लोग पानी फेच करते हैं और फिर वो पानी वो लोग पीते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे सैनिटेशन तो तुम सोच ही नहीं सकते हो. ठीक है, अब जो यहाँ पे अपर मिडिल ग्रुप होगा उनके पास ऐसा हो सकता है कि पाइप्ड कनेक्शन हो, उनके घरों में कनेक्शन हो. जरूरी नहीं है कि उनके पास क्या कहते हैं उसको, प्रॉपर फिटिंग हो सारी पाइप्स की, मतलब कि प्रॉपर ऐसा हो कि हाँ हर जगह पानी के लिए प्रॉपर सप्लाई है, हर जगह हर टाइम पानी आ रहा है. इवन इन दिल्ली यू वुड फाइंड दैट इन मोस्ट ऑफ द एरियाज यू विल हैव वाटर कमिंग फ्रॉम लाइक in the morning 5 to 7 and in the evening 6 to 7, something like that, right? So even the government supply in capital city like Delhi, you have limited access. That means that you have limited capabilities also, right? So all those people would come here, and some, the richer one, can afford to have water anytime because they can afford to have tankers anytime, or they can afford to have the bore wells so that they can get the water. They would come here,
right? So these are the basic factors on which you can define the force strata, right? So now you write we can define or segregate people in four stratum four stratum based on common accessibilities. These accessibilities can vary from cooking fuel, drinking water, health, education, type of floor or housing. These all keyword you would find in your multidimensional poverty index, and that is why I'm making you write in that way only. Type of floor or housing, type of fuel, access to drinking water and sanitation, Have you written the type of floor? Okay. Drinking water and sanitation, clothing, etc. The difference varies as you gave you write the example of coal. So you write in terms of cooking fuel, the lowest stratum would use coal, the second lowest can use kerosene, the second highest can have manufactured burners or LPG/LNG connection. So they can have LPG or LNG. Here you have electric, or what do you say, induction, right? So this is your cooking. Now if you talk about education, I gave you the example. You would write
here. Okay. Now think of cloth. What type of cloth would the lowest stratum would have? They can have either the second hand, old, and inadequate. Right? अगर तुम देखोगे गांव में अभी भी, ठीक है, या फिर ऐसे स्लम एरियाज में, व्हाट वुड यू फाइंड? जो बच्चे हैं वो बेयरली मिनिमम कपड़े पहने हुए हैं, ठीक है, पुराने कपड़े पहने हुए हैं, राइट? तो ये तुम देखोगे। जो सेकेंड लोएस्ट होगा वहां पे क्या होगा? तो वहां पे जो होगा तुम्हारा कि ये सेकेंड हैंड या फिर ओल्ड कपड़े तो होंगे, बट दे कैन हैव एडिक्वेट अमाउंट ऑफ क्लोथ, राइट? कि जैसे अगर बारिश हो रही है तो उनके पास में भी रेनकोट ना हो, बट इनके पास उतने कपड़े हो कि उनको ठंड तो नहीं लगेगी, ठीक है। फिर जो सेकंड हाईएस्ट हैं इनके पास जो होगा वो न्यू क्लोथ्स होंगे, ठीक है, और इनके पास ऑब्वियसली ऑल द लग्जरी क्लोथ्स एंड ऑल, राइट? So this is how, based on the access to resources, you can actually define it, right? You can take other examples as well. और क्या सोच सकते हो बताओ, एक दो एग्जाम्पल अपने तरफ से बताओ। जैसे हमने सैनिटेशन की बात करी, वाटर की बात करी, तो सैनिटेशन के नाम पे इधर क्या होगा? Can they think of sanitation? No. So they don't have proper defecation system, right? And that is why you have the open defecation free India program that is there, making up of toilet by the government. These are all because of the sanitation part, right? You can think of other things like water accessibility, हर घर नल से जल योजना, right? Or electricity. So we haven't talked about electricity. You can think of electricity as well. So if you talk about electricity, will the lower stratum will have the access to electricity? No, right? If we talk about the second lowest, what would be the condition? So they have, like, let's say electric bulb, but fans, but not the electric equipments like AC, TV, fridge and all. In the second highest, you can have fridge, but not the air conditioner. You can have the cooler, but not the air conditioner or the room heater, something like that. Obviously, the higher stratum will have all of these resources, right? So by these, you can think of all the things that I made you write about the electricity part, about the sanitation, floor, type of food, type of floor. So all these things that you can think, right? So based on that, you can define all the economy into 4 strata. Here, just look at here that we haven't talked about the इनकम पार्ट हियर, राइट? हमने यहाँ पे बात नहीं करी है कि कितना इनकम इनके लिए जरूरी है, हमने बस रिसोर्स के टर्म में इनको डिफाइन करा है। पैसे की बात यहाँ अभी तक हमने नहीं करी है, ठीक है? अब आते हैं पैसे पे, ठीक है? क्योंकि अब जब इतनी चीजें हो गई तो इकोनॉमिस्ट ने बोला कि ये सारी चीजें तब आ जाएगी लोगों के पास जब पैसा होगा, ठीक है? बट यू वुड फाइंड दैट इवन विद द मनी यू कांट हैव द money has its own difficulties. As we go on, I will let you know. Like एक difficulty तो यही है कि मान लो कि आज तुमने define करा कि 100 रुपए में तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है? आज के लिए तुमने define कर लिया, अब वो तुमने रिवाइज ही नहीं करा 10 साल तक, ठीक है? लाइक ये बुक जब लिखी गई, लेट्स से 2019 में लिखी गई, क्या 2019 में जो चीज़ों की प्राइस थी आज वही प्राइसेस है? उस टाइम पे इन्होंने डिफाइन करा कि $3 जो है वो अपर मिडिल का अपर मिडिल इनकम का है या फिर लोअर मिडिल इनकम का है, इतना इनकम उनके लिए सफिशिएंट है, ठीक है? लोअर मिडिल इनकम के लिए डिफाइन करा 3 पॉइंट समथिंग एंड अपर मिडिल इनकम के लिए डिफाइन करा $15 समथिंग, ठीक है? क्या आज भी वही चीज एप्लीकेबल है? ठीक है, आज नहीं है, बिकॉज तब पेट्रोलियम प्रोडक्ट था अराउंड 87 रुपीज, अभी है 102 रुपीज, ठीक है? उस टाइम पे जो तुम्हारा क्या कहते हैं पल्सेस का प्राइस था दैट वाज अराउंड 70, इट इज नाउ अराउंड 90. इफ यू लुक एट द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है, तो उसमें भी तुम देखोगे कि इन्फ्लेशन वाज अराउंड 2%, 1.8%, इट इज नाउ अराउंड 4.75%.
ठीक है, तो चीज़ें तो ऐसे चेंज हुई है। और जैसे हम लोग अब इस बार ही चेंज किया, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के इंडेक्सेस चेंज किए। लाइक कि अगर मैं तुम्हें बताऊं, पहले के इंडेक्स में इन्होंने ऐड कर रखा था तुम्हारा सीडी डीवीडी प्लेयर्स, ठीक है, क्योंकि 2011 का वो इंडेक्स था। 2011 के टाइम पे लोग सीडी डीवीडी यूज करते थे, पेन ड्राइव यूज करते थे। आज के टाइम पे लोग नहीं करते हैं सीडी डीवीडी यूज, ठीक है, आज उनके पास मेमोरी कार्ड्स है, क्लाउड स्पेस है, राइट। तो अब क्लाउड सर्विसेज को हम पे करते हैं। पहले हम क्या करते थे कि कोई पेन ड्राइव खरीदा, उसमें हमने घर की सारी फोटोज को कलेक्ट करके रखा, तो वो हमारे कंजम्पशन बास्केट का पार्ट था, राइट। बट आज की डेट में हम वो पेन ड्राइव खरीदते ही नहीं है, हम क्या करते हैं, गूगल स्टोरेज में ही कुछ पैसा देते हैं और स्टोरेज बढ़वा लेते हैं, राइट। तो नाउ द क्लाउड सर्विसेज, दैट इज अ सर्विस टू यू, सो दैट इज मेकिंग द डिफरेंस, राइट। तो समय के साथ साथ चीजें चेंज होती है, उसको इनकॉर्पोरेट करना जरूरी है, और इसलिए इंडेक्सेस को और जो नंबर्स हम पुट करते हैं उनको चेंज करना जरूरी है। दूसरा चीज क्या दिक्कत है वो देखो। मान लो ये हमने डिफाइन कर लिया कि $3 पर कैपिटा पर डे, ये एक लाइन हमने डिफाइन कर ली, ठीक है, कि इससे नीचे जो है वो पुअर है, ठीक। अब इसके नीचे कुछ लोग यहां हो सकते हैं जिनका इनकम की 2.7 सेंट्स है, ठीक है, और कुछ यहां हो सकते हैं जिनका सिर्फ 70 सेंट्स है। इनके लिए तो दोनों ही पुअर है, बट दोनों की एक्सटेंट ऑफ पॉवर्टी में कितना डिफरेंस है, यू कैन सी। Okay, so basically when we define a line or a rigid path, that comes with the difficulty of called the extent of poverty, right? And that is not catered in all these things. So पहली चीज जो आई, पहले तो हमने बोला कि बेसिक चीजें हैं या नहीं है, हमने पैसा छोड़ दिया। अब हम कह रहे हैं कि चलो ठीक है मॉनेटरी टर्म में, क्योंकि अगर लोगों को हमने पैसा दे दिया ना इतना, तो वो जो है अपलिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है, उतना वो चीज एक्सेस कर लेंगे, ठीक। फिर हम देखेंगे कि उसमें दिक्कत थी, तो फिर हम आगे कैसे बढ़े, ठीक है। तो नेक्स्ट यू राइट, the countries are classified based on average income levels by UN or United Nations and World Bank in different categories like, तो देखो जब तुम देखोगे ना डेफिनेशन, ठीक है, कि ये जो डेफिनेशंस आती है कि इतना इतना इतना, तो अभी जैसे रिसेंटली वर्ल्ड बैंक ने पॉवर्टी लाइन को चेंज करके फ्रॉम 2.75 से $3 पर डे पर कैपिटा पर डे कर दिया है, ठीक है। दिस इज द मिनिमम पॉवर्टी लाइन दैट दे हैव डिफाइंड। ये वर्ल्ड बैंक का डेफिनेशन है। ऐसे ही IMF भी डिफाइन करते हैं, ऐसे ही UN भी डिफाइन करते हैं, ऐसे ही OECD भी करते हैं। OECD क्या है बताना? OECD इज योर ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये मल्टीनेशनल बॉडीज हैं, ठीक है, ये आपका डिफाइन करते हैं कि क्या एक लेवल होना चाहिए, ठीक। तो इससे क्या होगा कि जैसे अब इन्होंने डिफाइन करा तो एक बेसिक तुम्हें आइडिया लग जाएगा। क्योंकि देखो बात क्या है कि जब हम पहले स्ट्रेटा की बात कर रहे थे कि 4 स्ट्रेटा में लोग होंगे, तो उन 4 स्ट्रेटा में हमने ये नहीं बोला कि हम किसको क्लासीफाई कर पाएंगे। अब तुम लोगों से जाके तुम उनका इनकम पूछ सकते हो कि कितना कमा रहे हो, या फिर तुम उनकी सैलरी स्लिप देख के ये देख सकते हो कि वो कितना कमा रहे हैं, लेकिन उनसे तुम ये नहीं देख पाओगे हर घर जा करके कि किनके पास कितना एक्सेस टू रिसोर्सेज हैं। क्योंकि पिछला जो हमारा क्लासिफिकेशन था बेस्ड ऑन 4 स्ट्रेटा वाज बेस्ड ऑन आर ये जो था ये बेस्ड ऑन एक्सेस टू रिसोर्सेज है। अब इसमें तुम्हें जो लोगों के घर घर जाके चेक करना पड़ेगा, राइट, दैट इज नॉट फीजिबल, राइट, बट यू कैन चेक द पर कैपिटा इनकम और यू कैन चेक इन अ पर्टिकुलर रीजन व्हाट इज द इनकम ऑफ सर्टेन पॉपुलेशन, राइट। तुमने इकोनॉमी का जो है GDP निकाला या GNP निकाला, ठीक है, सो वी आर कैलकुलेटिंग GNI, ग्रॉस नेशनल इनकम
and then we are dividing with the population. Divided by population, we will have your per capita income और per capita GNI. ठीक है, ये तुम निकाल सकते हो क्योंकि हमें पता है कि GNI कैलकुलेट कैसे करना है. इसके लिए हमारे पास पूरा जो है नेशनल इनकम अकाउंटिंग फॉर्मूला है कि नेशनल इनकम हम कैलकुलेट कैसे करेंगे. डिफरेंट मेथड्स हैं, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, प्रोडक्शन मेथड, उससे हम कैलकुलेट करते हैं. राइट, एक बार ही जाके घर देख लेना इसको कि कैसे कैलकुलेट करते थे. क्लास 12 में हमने पढ़ा था और फिर फर्स्ट सेमेस्टर में भी हमने पढ़ा था. ठीक है, तो उसके बाद हमने इससे पर कैपिटा इनकम निकाल लिया. अब हमने जब पर कैपिटा इनकम निकाल लिया तो अब जो है इसमें हम चेक कर सकते हैं इन अ गिवन क्या कहते हैं एरिया और इन अ गिवन कंट्री लोगों की इनकम क्या है. या फिर हम देख सकते हैं कि लेट्स से कि तुमने क्या करा, इंडिया में 28 स्टेट्स हैं. ठीक है, हर स्टेट का अलग अलग तुमने निकाल लिया कि इनकम क्या है. ठीक, अब इसमें से जो है तुमने चूज करा कि तुमने या फिर तुमने फिल्टर लगाया कि कितने लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम $3 पर डे से कम है. ठीक है, ये तुम कर सकते हो. ठीक है, क्योंकि तुम्हारे पास लोगों की एक एक्सपेक्टेड सैलरी स्लिप होगी या फिर जो भी तुमने गवर्नमेंट से डेटा निकाला है पर कैपिटा नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए, वहां से तुम चीजें देख सकते हो. फिर वहां से तुम बता सकते हो अच्छा इतने लोग हैं ऑन एन एवरेज, दैट इज ऑल्सो बिकॉज बेस्ड ऑन एक एवरेज डेटा तुम्हारे पास होगा. उस एवरेज पे तुम देख पाओगे कि कितने लोग हैं जो तुम्हारा इस इनकम ग्रुप में फॉल कर रहे हैं. ठीक है, तो उससे तुम जो है कैलकुलेट कर सकते हो एक एस्टिमेटेड पॉवर्टी. ठीक, तो इसीलिए हम पॉवर्टी लाइन डिफाइन करते हैं क्योंकि ये इजीएस्ट वे है. ठीक, इसी बेस पे जो है वर्ल्ड बैंक ने 4 तरीके से डिफाइन करा है. क्या क्या है ये 4? एक है तुम्हारा लोअर इनकम ग्रुप, लोअर मिडिल इनकम ग्रुप, अपर मिडिल इनकम ग्रुप एंड हाई इनकम ग्रुप. ठीक है, तो जो लोअर इनकम ग्रुप में है उनको हमने बोल दिया एक्सट्रीमली पुअर है. ठीक है, अब इसके लिए देखो कि क्या डिफाइन करा है. इसके लिए इन्होंने डिफाइन करा है $1 है. चेक करो. तो देखो इस हाई इनकम के लिए उन्होंने $12,056 डिफाइन करा है. ठीक है, $3,896 टू $12,056, ये जो है तुम्हारा अपर मिडिल इनकम ग्रुप है. सॉरी, इफ इनकम इज लेस देन दिस तो वो लोअर मिडिल इनकम ग्रुप है. ठीक है, ऐसे फिर लोअर इनकम ग्रुप है. ठीक, तो इस हिसाब से इनकम ग्रुप्स डिफाइंड है कि इतना अगर तुम्हारा इनकम है पर कैपिटा पर डे देन यू आर फॉलोइंग इन दीज कैटेगरीज. अब वही इसके डिमेरिट्स मैंने तुम्हें बता ही दिए थे. ठीक है, तो ये 4 पहले लिखो एंड इनके कैटेगराइजेशन लिखो. पहला है तुम्हारा लोअर इनकम ग्रुप. यू राइट लोअर इनकम कंट्रीज as per World Bank classification. As per World Bank classification, if the income is less than $996 per capita per day, they fall under lower income group. सॉरी, पर डे मत लिखना, पर कैपिटा है ये, बस पर कैपिटा ईयरली है ये. ठीक है, इफ इट इज लेस देन $996 per capita, it is lower income group. If it is between $996 and $3,896, it is
लोअर मिडिल इनकम ग्रुप, falling between 3,896 to 12,056. It is upper middle income group, and more than $12,056 it is higher income group. ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, जैसे हाई इनकम ग्रुप में तुम्हारा आएगा यूएसए यूके। जो अपर मिडिल इनकम ग्रुप है इसमें तुम्हारे आएंगे कंट्रीज लाइक चाइना। कंट्री नाउ पहले चाइना जो था वो लोअर इनकम ग्रुप में था, देन इट शिफ्टेड टू लोअर मिडिल इनकम ग्रुप। अब देखो बात ये है कि एज इकोनॉमी वुड डेवलप इट वुड जंप फ्रॉम ऑल दीज फोर। ठीक है, अब जैसे मान लो इंडिया है, इंडिया का पर कैपिटा इनकम कितना है अभी 2,000 समथिंग है, तो दैट वुड बी इन लोअर मिडिल इनकम ग्रुप टू अपर मिडिल इनकम, सॉरी लोअर मिडिल इनकम ग्रुप में आएगा, 3,000 से कम है। ठीक है, तो ऐसे ही जो है जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो करेगी, अब अगर हम अभी $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएं या $8 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएं तो हम अपर मिडिल इनकम ग्रुप में आ जाएंगे। तो एज द इकोनॉमी वुड ग्रो तो उनका पर कैपिटा इनकम, बिकॉज तुम्हारा जो जीडीपी है, जो न्यूमरेटर है वो तो बड़ा होता जा रहा है ना। ठीक है, तो ऐसे ही ये चेंज होता जाएगा। ठीक, तो अभी के लिए लेकिन जो हायर इनकम ग्रुप है लाइक नॉर्वे, लाइक यूएसए, लाइक जापान, लाइक यूके, ये हायर इनकम ग्रुप में, बिकॉज इनका पर कैपिटा इनकम इतना है। ठीक है, तुम्हारी जानकारी के लिए एक चीज़ और बताता हूँ, जब हम HDI कैलकुलेट करते हैं तो उसमें भी हम एक थ्रेशोल्ड लेते हैं, मतलब एक लिमिट लेते हैं कि वहाँ तक इनकम बढ़ेगी तभी लोगों का वेलनेस इंक्रीज होगा। ठीक है, तो उसमें हम $25,000 पर कैपिटा पर डे लेते हैं, पर कैपिटा लेते हैं। ठीक है, तो इट मीन्स इसका डबल ऑलमोस्ट। ठीक है, मीन्स कि एक इनकम आने के बाद तुम्हारी वेलबींग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर तुम इतने अमीर हो जाओगे तुम्हारे इनकम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेम चीज तुम यहां भी सोच सकते हो कि $996 से नीचे अगर तुम कहीं भी हो तुम एक्सट्रीमली पुअर ही हो। ठीक है, तो अगर तुम $100 से $200 भी पहुंच जाओगे, ठीक है, इट इज 2 टाइम्स इंक्रीज। ठीक है, फास्टेस्ट इंक्रीज। बट क्या तुम्हारे इनकम लेवल पे और तुम्हारे कंडीशन पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। ठीक है, बिकॉज यू आर स्टिल अंडर एक्सट्रीम पॉवर्टी कैटेगरी, एंड दैट इज वाई यू वुड सी दैट इवन इन द डेवलपिंग कंट्री जो ग्रोथ रेट होता है वो 6%, 7%, 8%, 10%, मोर देन 10%, बट उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो लोअर होता है। जैसे इंडिया in the last 2 decades it has grown above 7%, 6%, except barring the COVID year and some uncertainty like 2013 to 14 वाला एरिया। तो उस टाइम पीरियड पे छोड़ करके अगर देखोगे तो अराउंड 6%, 7% पे हमने ग्रो करा है। इतना ग्रोथ हम इसलिए कर पाए, एक तो हमारे पास स्कोप है, हम लोअर मिडिल इनकम ग्रुप में हैं। ठीक है, हमारे पास स्कोप है कि हम थोड़ा और कर पाएंगे, लेकिन तुम ये सोचो कि 996 से 2000 तक भी आ गए हम अगर, तब भी तो हम लोअर मिडिल इनकम ग्रुप में ही रहेंगे, क्योंकि जो रिसोर्सेज होने चाहिए, जितने डेवलप होने चाहिए, वो उस हिसाब से डेवलप हो नहीं पाते हैं। इट इज डेवलपिंग एंड सर्टेनली वंस इट रीच द थ्रेशोल्ड ऑफ दिस, ठीक है, तो वो जो है तुम अपर मिडिल इनकम में आ जाओगे। अब अगेन इसकी जो क्रिटिसिजम्स हैं जो मैंने तुम्हें बताया था, तो उसको अगर देखोगे क्रिटिसिज्म क्या है, ये देखो, हमने बोल दिया अगेन कि लेट्स से $996 था, इतना अगर है तुम जो है इससे नीचे अगर हो, तुम अगर तुम इधर कहीं हो इसके नीचे, तो यहां पे तुम एक्सट्रीम पॉवर्टी में हो। राइट, तो यहां पे तुम अगर मान लो कि ग्रो कर भी जाओगे, अगर तुम यहां पे हो कि यहां पे हो, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, तो गवर्नमेंट्स करती क्या है, गवर्नमेंट हैज इंसेंटिव टू अपलिफ्ट दिस टू हियर, नॉट दिस वन टू हियर। ठीक है, अब देखो जैसे अभी क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट जो है फ्री राशन दे रही है, उसके कारण क्या हो रहा है, उनको कॉस्ट ऑफ लिविंग कम हो रहा है,
उनको कुछ पैसे दे जा रही है, लाइक 1500 2000 रुपीज़। 2000 इज़ बेयरली मिनिमम, लेकिन अगर तुम पर कैपिटा बेसिस पे देखोगे तो उनको $3 के आसपास मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर उनको उतना मिल जाएगा तो वो जो है जस्ट पॉवर्टी लाइन को क्रॉस कर लेंगे। तो उससे क्या होगा कि गवर्नमेंट कैन से वी हैव रिड्यूस्ड डाउन द पॉवर्टी इन इंडिया, राइट? बट आर दे एक्चुअली वर्किंग फॉर अपलिफ्टिंग द पीपल? Are they working for their improvement in terms of education, healthcare, in terms of the skill development, in terms of the training? Because कि अगर तुम लोगों को पैसा दे करके ही ऊपर पहुंचाओगे, उनके पास स्किल ही नहीं है, एजुकेशन ही नहीं है कि वो आगे अपना कुछ कर पाएंगे, तो नो डाउट वो यहाँ तो पहुंच जाएंगे बट वो यहाँ कभी नहीं पहुंच पाएंगे। तो जो तुमने एक अलग लाइन डिफाइन कर रखा था 3000 समथिंग का, ठीक है, तुम वहाँ पे तो नहीं पहुँच पाओगे ना। तो यू आर समवेयर इन द मिडिल इनकम ट्रैप। ठीक है, तुम उतना ही करोगे जहां पे तुम एक्सट्रीम पॉवर्टी से तो निकल जाओगे, लेकिन फंक्शनल पॉवर्टी से नहीं निकल पाओगे। सो यू राइट अ डेफिनेशन ऑफ फंक्शनल पॉवर्टी। You write, it refers to a situation in which a person falls back in poverty because of uncertainties like educational expenses, healthcare expenses, or educational expenses, healthcare expenses, or expenses in marriages in developing economies. That is extravagant expenditure or conspicuous consumption. ठीक है, तो बेसिकली मैं क्या कह रहा हूं, सॉरी, marriages expenses, right? Expenses in the marriages, that is conspicuous consumption. तो तुम देखोगे जनरली डेवलपिंग इकोनॉमीज में क्या होता है, पीपल गेट टू कॉन्स्पिक्यूअस, स्पेलिंग चेक कर लेना घर जाके, ठीक है? तो हाँ, ठीक है। तो देखो डेवलपिंग इकोनॉमी में एक टेंडेंसी होती है क्या, कि लोग जो है जनरली कम्यून में रहते हैं, एक साथ रहते हैं, ठीक है, लार्ज फैमिली स्ट्रक्चर होता है, तो घर में कोई कमा रहा होता है, फैमिली इनकम जो है बेरली इतना सस्टेनेबल होती है। इसलिए आगे तुम देखोगे तुम्हारे बुक में एक डेफिनेशन है सब्सिस्टेंस इनकम की, वो भी मैं तुम्हें लिखवाऊंगा क्या होता है, ठीक है? तो वहाँ पे क्या होता है, तुम देखोगे कि घर में कोई कमा रहा है, बाकी लोग जिनको पढ़ना होता है उनके पढ़ने के एक्सपेंसेस निकल जाते हैं, जिनको कोई दिक्कतें हैं तो वो हो जाती है। बट अगर कोई बीमार हो गया, ठीक है, मान लो किसी की बीमारी में 3-4 लाख 5 लाख का खर्चा हो गया इंडियन कंटेक्स्ट में अगर मैं बोलूँ तो क्या होता है कि सडनली यू फॉल इनटू पॉवर्टी। उनके घर में तुम देखोगे कि बहुत सारे इश्यूज आने शुरू हो जाएंगे इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, ठीक है? तो ऐसा सिचुएशन कि अभी वो है वो जस्ट पॉवर्टी लाइन के ऊपर है यहाँ पे, ठीक है, बट बिकॉज ऑफ ऑल दीज दे फॉल बैक इनटू पॉवर्टी। इसी को बोलते हैं फंक्शनल पॉवर्टी, ठीक है? इसका एक एग्जांपल जो मैंने तुम्हें बोला मैरिज रिलेटेड एक्सपेंडिचर, ठीक है, इंडिया में तुम देखोगे कि शो ऑफ दैट इज कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन, उसके कारण लोग एक्स्ट्रा एवेजेंस एक्सपेंडिचर करते हैं कि 20 लाख 30 लाख 50 लाख 1 करोड़ ऐसे शादियों में खर्च करते हैं, ठीक है, एंड दैट मनी इटसेल्फ पुशिंग देम फ्रॉम अबव पॉवर्टी लाइन टू बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है? दिस इज द फंक्शनल एंड दिस इज द टिपिकल फेनोमेना ऑफ एनी डेवलपिंग इकोनॉमी। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इंडिया में है, ठीक है, ये तुम्हें बाकी डेवलपिंग इकोनॉमीज में भी ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है? डेवलप्ड, इसलिए तुम देखोगे डेवलप्ड कंट्रीज में सिचुएशन ही डिफरेंट है। वहाँ पे ऐसे ज्वाइंट फैमिली का ट्रेडिशन ही नहीं है। पीपल हैव समथिंग कॉल्ड इंडिविजुअलिटी, फ्रीडम, कैपेबिलिटी। बिकॉज जैसे तुम्हें स्टार्टिंग ऑफ द क्लास में मैंने बोला, अमीर भी हैं यहाँ पे, ठीक है, दे हैव अ रिस्ट्रिक्शन कि नो गर्ल्स कांट गो आउटसाइड आफ्टर 10 PM और आफ्टर 8 PM. That is not freedom. You should provide them capability
that okay, they can go into, and they should have the freedom that they can do what they want to do, right? And they should have this merit, they should have the education, what is right or what is wrong for them. And this is freedom, this is capability, and this is how a developed society should be, right? And that is why you would see that individualism is more like prominent in the developed economies, because they have the institutions like that, right? इंडिया में और डेवलपिंग इकोनॉमी में एक और कंस्ट्रेंट क्या होता है कि बाहर जाएंगे, बाहर सेफ नहीं है. सेफ क्यों नहीं है? बिकॉज इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग नहीं है, राइट? क्या कभी ऐसा होता है कि लाइक किसी मिनिस्टर के बेटे को किडनैप कर लिया? बहुत रेयर. इंडिया, दिल्ली में तो नहीं होता, ठीक है, बिकॉज इंस्टीट्यूशन आर स्ट्रांग हियर. दे हैव अ सर्टेन टेंडेंसी दैट ओके दिस पर्सन कैन गेट किडनैप्ड और समथिंग लाइक दैट, राइट? उनके लिए सेफ्टी है, बाकी लोगों के लिए सेफ्टी नहीं है. रीजन क्या है? कि हमारा सिस्टम उस हिसाब से डेवलप नहीं है. इंस्टीट्यूशन डेवलप होगा तो चीजें खुद ही डेवलप होगी और कैपेबिलिटीज खुद डेवलप होगी. एंड दैट इज वाई नेशन फेल, बुक्स लाइक वाई नेशन फेल और कैपेबिलिटी अप्रोच और द सोशल चॉइस थ्योरी बाय अमर्त्य सेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हैं. उसमें अगर कभी टाइम मिले तो जब भी कोई नॉवेल ऐसे वो होता है, नोबेल जीतते हैं ना कोई इकोनॉमिस्ट, तो उनके नॉवेल, उनके वो जो बुक है उनको पढ़ो. लाइक क्लॉडिया गोल्डिन का जो वर्क था ऑन विमेन, ठीक है, बहुत ही अच्छा वर्क था. तुम उसको पढ़ोगे तो तुम्हें भी कुछ समझने को मिलेगा, कुछ ऐसे सीखने को मिलेगा. लाइक जो अभी मैंने बात करी, अभी जो शुपिटर की थ्योरी पे अभी जो इस साल जो वो मिला है, नोवेल मिला है 2025 में, उन्होंने शुपिटर की ग्रोथ थ्योरी जो थी वो आए हुए लगभग 60-70 ईयर्स हो गए, वो आज भी रेलेवेंट है, ठीक. और कैसे रेलेवेंट है वो सारी, और वो डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का पार्ट है, राइट? तो डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में जो वाई नेशन फेल, उसमें भी डेवलपमेंट की ही बात हो रही है कि इंस्टीट्यूशन क्यों कैसे इंपॉर्टेंट है. कोई भी बुक उठाओ, कोई भी ऐसे उठाओ, उसके 10-15 पेजेस को पढ़ो, वो तुम्हें बहुत इंसाइट्स देगा. एंड वो तुम्हें प्रैक्टिकल लाइफ, तुम्हें एग्जांपल्स प्रोवाइड करेगा कि कैसे जो भी तुम चीज़ें पढ़ते हो इकोनॉमिक्स में, वो कैसे अप्लाई हो रही है इकोनॉमी में, ठीक है. तो और फिर ऑब्वियसली लोग उस पर नोवेल जीत रहे हैं, तुम्हें भी लगेगा कि अच्छा दिस इज द रिवॉर्डिंग फील्ड. तुम्हें भी इंकरेजमेंट होगी कि अच्छा ठीक है, इसमें रिसर्च किया जा सकता है, इसमें कुछ ऐसा काम किया जा सकता है, ठीक है. चलें आगे. तो ये हो गया, फंक्शनल पॉवर्टी वगैरह की बात हो गई, ठीक है, ये हो गया. नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट यू राइट डेफिनेशन ऑफ सबसिस्टेंस इकोनॉमी. लिखो सबसिस्टेंस. सबसिस्टेंस, ठीक है. सबसिस्टेंस, ठीक है. तो देखो सबसिस्टेंस क्या होता है. सबसिस्टेंस इज बेसिकली बेयर मिनिमम, ठीक, जिसपे कि लोग सस्टेन कर सकें. दैट इज योर सबसिस्टेंस. कि अब जैसे इतना ही पैसा मिल रहा है, इतना ही पैसा है फैमिली में कि वो सबको जो है एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते, बट फूड प्रोवाइड कर सकते हैं. तो भूख से मरेंगे नहीं, बट उससे ज़्यादा लग्जरी भी नहीं है, ठीक है. काम करने के बाद तुमको इतना ही वेज मिल रहा है कि उस काम को तुम छोड़ दोगे अगर, ठीक, तो तुम्हारे मरने की हालत आ जाएगी, तुम जो है एक्सट्रीम पॉवर्टी में चले जाओगे. तो दैट इज योर सबसिस्टेंस वेज, बेयर मिनिमम वेज, ठीक है, जो तुम्हें मिल रहा है, ठीक. उससे नीचे जो है तुम काम कर ही नहीं पाओगे, ठीक. सबसिस्टेंस. सो यू राइट मिनिमम resources which is required minimum resources which is required for basic livelihood, ठीक है. ये हो गया, ठीक. चलो आज के लिए लास्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, ठीक, देन वी विल सी. अब देखो, जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं इन जनरल, तो किसी भी सोसाइटी में, ठीक, जितना रोल मेल मेंबर का है उससे कहीं ज़्यादा रोल फीमेल मेंबर का होता है, ठीक है. जो मैंने तुम्हें बात करी क्लॉडिया गोल्डिन के वर्क की,
ठीक है, उससे तुम देख सकते हो, या वहीं से अगर मैं टेकअप करूं तो तुम ऐसे समझ सकते हो कि जो सोसाइटी में जनरली भी देखो 50% तो फीमेल है, 50% फीमेल है सोसाइटी में, ठीक है, अराउंड, ठीक है, नॉट एग्जैक्टली बट 49.5 तो है ही, ठीक है। तो अगर तुम सोसाइटी में 50% लोगों को कैटर ही नहीं करोगे, उनके डेवलपमेंट को कैटर ही नहीं करोगे, तो सोसाइटी डेवलप कैसे हो सकती है? इसीलिए एक तो पहला फैक्ट ये है कि पॉपुलेशन शेयर जो है उनका हाफ है। तो रोल ऑफ वुमेन, पहला चीज 50% पॉपुलेशन। दूसरा चीज देखो क्या है, तो नेपोलियन कहते हैं कि इफ यू एजुकेट अ मेल मेंबर यू आर एजुकेटिंग अ पर्सन, बट इफ यू आर एजुकेटिंग अ फीमेल पर्सन यू आर एजुकेटिंग अ फैमिली। सो बेसिकली दे कॉन्ट्रीब्यूट टू एजुकेशन ऑफ द फैमिली। ठीक है, थर्ड थिंग देखो क्या है, इट इज जनरली फाउंड, इट इज जनरली फाउंड दैट अगर देखोगे कि जो फीमेल होती हैं, ठीक है, वो वेलफेयर एक्सपेंडिचर ज्यादा करती हैं देन मेल मेंबर। ठीक है, अगर किसी किसी फैमिली में मेल मेंबर अर्निंग है, ठीक है, तो वो नेसेसिटीज को पे वर्क करेंगे, बट सब्सिस्टेंस ही होगा उनका, वो बेयर मिनिमम ही होगा जो वो कर पाएंगे। बट एक फीमेल जब करती हैं तो वो मोर एक्सपेंडिचर कर पाती हैं ऑन सैनिटेशन। तो यहाँ पे वेलफेयर एक्सपेंडिचर इन टर्म्स ऑफ सैनिटेशन, in terms of education, in terms of healthcare, ठीक है, एंड ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट बनाती है कि हम वुमेन को भी कैटर करें। ठीक है, अब इनको मेजर करने के तरीके क्या है? तुम्हारा एक तो जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स होता है जिसमें हम जेंडर की बात करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद तुम्हारा वुमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट होता है, वुमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। जेंडर इंक्लूजन इंडेक्स होता है, तो ये सारे इंडेक्स पे तुम जो है मेजर करते हो किसी सोसाइटी में। देन यू ऑल्सो लुक फॉर द प्रोपोर्शन ऑफ योर वुमेन इन पार्लियामेंट, ठीक है, बिकॉज दैट इज योर रिप्रेजेंटेशन। एंड दैट इज वाई जो अभी ये बात हो रही है ना कि डिलिमिटेशन के साथ हम नारी शक्ति वंदन अभियान लेके आएंगे जिसमें 33% रिजर्वेशन मिलेगा, दैट इज वन ऑफ द गुड स्टेप कि तुम रिप्रेजेंटेशन में दे रहे हो। ऑल्सो अगर मैं तुम्हें यहाँ बताऊं तो एक और चीज तुम जो लिख सकते हो, मोर रैशनल देन मेन, मोर रैशनल देन मेन। डिबेटेबल है, ठीक है, मेल होके मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ, बट ये सच है कि जो वो होता है, ठीक, विमेन होती हैं वो मोर रैशनल होती हैं रिलेटिवली, ठीक है, इमोशनली ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं, तो उनके जो फैसले होते हैं, जो डिसीजंस दैट आर टेकन बाय विमेन आर जनरली मोर रैशनल, मोर एडुकेट, मोर अप्रोप्रिएट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम जनरली देखते हैं रोल ऑफ वुमेन में। ठीक, नेक्स्ट क्लास जब हम स्टार्ट करेंगे तो हम उसमें स्टार्ट करेंगे अमर्त्य सेन के कैपेबिलिटी अप्रोच से, और फिर मैं एक बार और देख लूँगा रीडिंग में, और कुछ अगर छोटा मोटा छूट गया हो तो वो मैं देख लूँगा। बाकी ये सारी चीज़ें एक बार देख लेना खुद से, जितना भी आज हमने करा है एक बार वो देख लेना। रीडिंग में स्टार्टिंग के 4-5 पेज आराम से पढ़ के आना, कुछ भी ऐसा होगा तो बता देना, ठीक है। ओके सर, चलें फिर, ओके चलो, थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू, ठीक।